Hi, welcome to today's episode of Guideline Review of the Week. Today, we shall be discussing about preterm premature rupture of membranes. Now, I chose this topic for today because I have seen that there has been a lot of discrepancy when residents manage these patients. Discrepancies have been found in terms of when do we deliver these patients, how do we monitor them, do we have to admit them? If we don't admit them, what do I have to do for these patients when they come to my OPD? Also, there is a question that often lingers around whether to give them tocolysis, whether to give them antibiotics and to give them which antibiotic and for how many days, steroids देना है या नहीं, tocolysis देना है या नहीं, and these all discrepancies shall be covered today in today's discussion of guideline review of the week. So welcome to today's episode, and today's episode is based on the green top guideline that has been issued by the Royal College of Obstetricians and Gynecologists. This guideline was issued on June 2019. There has not been any subsequent or significant, updates that have come over on this topic since then. So this is a very relevant guideline, and I believe that this lecture today is going to help each one of you in managing these patients. From my experience, if you're working in a hospital which has anything around 15 to 20 deliveries per day, you would be getting at least one such patient in every emergency duty of yours. And if not as much as one per emergency, I'm pretty sure that at least once in 2 to 3 emergencies, you would be getting these patients. So very essential for you to know how to manage these patients. So here we go. The first question that arises over here is a very basic question, what is PPROM? As the acronym suggests, preterm premature rupture of membrane. So basically, whenever there is a rupture of the amniotic membrane before 37 weeks is when we call it PPROM. Why is it an entity which is separate from PROM, that is premature rupture of membranes, which happens after 37 weeks? The answer is over here the baby is in question. The baby is at a risk of being born preterm. So जब भी ये बेबी प्रीटर्म पैदा होगा तभी उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे. The most significant ones being low birth weight, respiratory distress syndrome, then apart from the necrotizing enterocolitis, intraventricular hemorrhage, and apart from this, the inherent complications of leaking per vaginum, rupture of membranes, that is chorioamnitis. So all these complications can complicate the baby and also the mother. So this is the reason why a very specific guideline on how to go ahead with the management of this issue in pregnancy is very essential. So over here, the first question that comes up is, why should I be knowing about this topic and is it really that relevant? So over here, when they calculated all the data that they had accumulated in the United Kingdom, they said that almost 3% of the pregnancies, which is basically one in every 30th pregnancy, was having this issue of preterm premature rupture of membranes, because of which out of all the babies that were being born, almost 40% of the babies were being delivered before time, that is preterm, which is why this takes a lot of importance. Apart from that, as I mentioned, that there are multiple complications that the baby will have to face, not just about prematurity, but also sepsis, cord prolapse, because often these pregnancies, जब भी PPRM होता है, the fetal head or the fetal station preterm है, तो there can even be malpresentation like breech presentation or transverse lie. तो ये बेबी का स्टेशन ऊपर रहता है और कभी कभी हेड नहीं है और बाकी के कोई अगर प्रेजेंटेशन है लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन या फिर ट्रांसवर्स ला है, देयर इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स एंड इमीडिएट इंट्रायूटेराइन फीटल डेमेज. सो उसके चांसेस काफी बढ़ते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, pulmonary hypoplasia, because the development of the baby has been impaired over here. Whenever there is a leak, the amniotic fluid has been drained out, there is nothing for the baby to suckle and take into its lungs, because of oligohydramnios, there can be pulmonary hypoplasia. So these are the reasons. Obviously, apart from pulmonary hypoplasia, major issue for the lungs, for the baby's lungs, is going to be respiratory distress syndrome. But this is also one of the complications that can complicate these pregnancies. Apart from that, there is also going to be a possibility of chorioamnitis and a rarer possibility of placental abruption, because of which not just the baby but even the mother's health will be at risk, and hence it becomes very important for us to know how to manage these patients. The median latency after PPRM is 7 days. This line means that
आफ्टर ऑल द स्टडीज वर बीन डन, जो मीन मीडियन मोड होता है, सो उसमें मीडियन बेसिकली द एवरेज नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच अ फीमेल ऑफन टेंड्स टू डिलीवर once she has had PPROM is said to be around 7 days. So basically within a week, or they'd say 7 days, यानी एक वीक के बाद generally females have been shown to deliver once they have had PPROM. Now this PPROM can be something that has happened at 26 weeks, it can be something that has happened at 36 weeks. ये जो स्टडी किया गया है इसमें सबको इंक्लूड किया गया है. This also says that this period of 7 days tends to shorten as the gestational age of PPRM advances. इसका ये मतलब है basically अगर ये 26 weeks पे PPRM हो गया है, so probably the pregnancy can go ahead till let's say 15 days, 20 days, 26 days, even a month or two. I have seen pregnancies that have been progressed by almost 3 months since they had their first event of PPROM. And we have managed those pregnancies successfully. Even you must have seen that pregnancies are managed for even a month or two after they have had a PPROM. But as this gestational age increases, जैसे ये 36, 37 की तरफ जाता है, ये जो days है between PPROM until delivery tends to shorten. So often women who have had PPROM at 36 weeks, they tend to deliver within a week. So ये जो gestational period है ये कम होते जाता है. So how do we diagnose it कि कैसे PPRM हुआ है? You might think it's a very straightforward thing, but it is not. We often tend to miss out. We tend to often forget how to differentiate between normal cervico-vaginal discharge, जो भी vaginal discharge आता है, white discharge आता है, mucoid discharge आता है. We often tend to mistake it for leaking per vaginum, and often leaking per vaginum है, and we tend to mistake it for the secretions, vaginal secretions. So how do we confirm it? First of all, you make a female lie down, and when you let her lie down, you put in a sim speculum. When you put in a sim speculum, यहाँ पे उन्होंने जैसे दिया है, when you put in a sim speculum and you examine her, you will see pooling of the amniotic fluid on that sterile speculum, on the speculum जो तुमने डाला रहेगा sim speculum, उसमें you will see pooling. Basically, there is collection of the amniotic fluid. This gives you a direct diagnosis of rupture of membranes. You do not need to do any other test to confirm it. But when there is not such frank leak, over here I'm using a term called as frank leak. Now there is another term that is also called as high leak. What is the difference between these two? So frank leak is basically जब ये जो rupture हुआ है, it is now if let us assume if this was your uterus and this over here was your cervix. Oh, ये नहीं चाहिए, sorry. So okay. So if this was your cervix, this was your uterus, I'm going to be using a blue, sky blue color for showing you membranes. So assuming that this was your membrane over here, ऐसा membrane था. Now if this leak has happened at this point, basically at the level of cervix, there is going to be a frank leak. यहाँ से पूरा फट जाएगा. इसके फटने के वजह से यहाँ से डायरेक्ट इसको हम लोग कहेंगे फ्रैंक लीक होने वाला है. ऐसे पूरा मेम्ब्रेन सब बाहर फ्रैंक लीक होने वाला है. ऑल द फ्लूइड इज गोइंग टू कीप कमिंग डाउन, बट इसको कहेंगे हम फ्रैंक लीक. देयर कैन बी समथिंग एल्स एज वेल दैट कैन हैपन एंड वी कॉल दैट टू बी high leak. Now this is a term that is very I'd say a slang term, I'd say, and slang as in it is not given in too many books, but इसका implication या फिर इसका meaning ये है कि if this is your amniotic membrane, यहाँ पे कहीं पे तो ऐसे ऊपर फटा हुआ है. Over here it is broken and hence the fluid is just trickling out through the vagina. It is not coming out like a gush of fluid. इसको कहते हैं high leak. So whenever there is going to be that frank leak which we discussed earlier, उसमें वो sterile speculum जब तुम लोग लेके जाओगे उसमें proper तुम लोगों को fluid दिखेगा. You'll see a gush or pooling of fluid. But whenever there is going to be a high leak, high HIGH, high वाला leak, you won't see इतना pooling immediately. So in those cases, how do you diagnose it? So what we often do is we take a litmus paper. So अभी हम लोग litmus paper लेते हैं, red color का litmus strip लेते हैं हम लोग. Now when we talk of red litmus paper is known to change its color to blue. It changes its color to blue. I'd rather use dark blue. Yeah, it changes its color to dark blue whenever there is alkaline or basic fluid. Basic is base वाला base. Alkaline fluid is present or is put on it. amniotic जो अपना fluid है, लाइकर है, amniotic fluid का pH होता है around 7.2 to 7.4, which is slightly
अल्कलाइन, वेर जो अपना यूजुअल वजाइना का पीएच होता है इट इज अराउंड 4.0. So ये जो pH है amniotic fluid का is definitely alkaline. So when I do this test, when I use this red litmus paper, it turns blue if there is presence of amniotic fluid. Whereas अगर वजाना में जस्ट secretions रहेंगे तो वो 4 रहेगा और ये red का litmus paper red ही रहेगा. But the problem arises in two things. जैसे अपने amniotic fluid का pH 7.2 to 7.4 है, वैसा ही similarly अपने blood का भी pH है. सो इफ देर इज ब्लीडिंग पर वजनम या फिर शो इज बेसिकली जो म्यूकस प्लग रहता है एट दी सर्विक्स व्हेन इट इज लेट ऑफ ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ लेबर, या फिर प्रॉपर एब्रप्शन हुआ है या फिर देर इज जस्ट फ्रैंक ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्विक्स, वो केसेस में भी ये जो रेड का है लिटमस पेपर वो ब्लू होगा. Apart from that, whenever there are opportunistic infections like bacterial vaginosis basically change the acidic medium of the vagina to alkaline and then they start living in there. In those cases as well, in patients with vaginal discharge because of infections, उनमें भी ये change होने वाला है. So I'll be confused whether this is blood or if this is bacterial vaginosis or if this is amniotic fluid. So साइंटिस्ट ने बहुत सोचा, उन्होंने बोला लेट अस फाइंड समथिंग इनसाइड द एमनियोटिक फ्लूइड व्हिच इज क्लासिकली फाउंड इन एमनियोटिक फ्लूइड एंड विल नॉट बी फाउंड इन ब्लड और वजाइनल इन्फेक्शंस. एंड देयर वर टू सब्सटेंसेस दैट दे फाउंड. वन वाज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये जो तुम लोग ने ग्रोथ हार्मोन में पढ़ा रहेगा, बाइंडिंग प्रोटीन 1 एंड प्लासेंटल अल्फा मैक्रोग्लोब्युलिन 1. ये दो सब्सटेंसेस उन्होंने देखे कि हमें मिल रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड में विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन दी बॉडी. उसमें से ये जो पीएएमजी है, प्लासेंटल अल्फा मैक्रोग्लोब्युलिन 1, दिस वाज समथिंग विच दे सॉ दैट दे कुड टेस्ट इट बेड साइड पे भी. मतलब यू हैव टू जस्ट कलेक्ट द फ्लूइड दैट इज कमिंग फ्रॉम द वजाइना, यू हैव टू कलेक्ट इट ऑन अ स्टेराइल स्वॉब. दैट स्वॉब हैज टू बी पुट इन अ सॉल्वेंट, एक फ्लूइड में डालना है और फिर वो फ्लूइड में वो स्टिक डालना है. जैसे अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का किट होता है, वैसे ही एक और सिमिलर किट आता है. यू हैव टू जस्ट पुट दैट स्टिक इनसाइड. इफ देयर आर टू लाइंस इट शोज दैट दैट फ्लूइड कंटेन्स PAMG1 which confirms whether there is leaking per vaginum. ये टेस्ट का नाम है, जो मार्केट में मिलता है, एमनीश्योर. This is a registered trademark name from the company which made it for the first time, amnisure. Basically amniotic fluid इसको shortly अपने को बताता है. So this is basically just a urine pregnancy test जैसा kit है जिसमें we test the amniotic fluid. So they say that whenever no amniotic fluid is observed या फिर एकदम scanty है, we should consider doing IGF BP1 or PAMG1. IGF BP1 is a lab wala test which is a lot more expensive and is not even available at all locations. So PAMG is a test which we often do, very easy to do, bedside कर सकते हैं और confirm कर सकते हैं. Apart from that, they say that there is no role in the ultrasound assessment of amniotic fluid. No role क्यों ऐसे बोल रहे हैं? Imagine that this pregnancy was already complicated by oligohydramnios. There was something like placental insufficiency था, chronic hypoxia था, बेबी को ब्लड सप्लाई कम आ रहा था बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक प्री-इक्लैम्शिया, बेबी को ब्लड सप्लाई कम था, बेबी के किडनीज को ब्लड सप्लाई कम था, यूरिन प्रोडक्शन कम था, ओलिगोहाइड्रामनियोस था. तुम लोग ने अल्ट्रासाउंड किया, PPROM में तुम लोग को दिख गया कि वाटर कम है, लाइकर कम है. यू वुड मिस इंटरप्रेट कि इतना फ्लूइड चला गया है कि उसमें कम है, लेकिन नहीं, वो ऑलरेडी कम था. The other thing that can happen is उसको हाई लीक है, हाई लीक की वजह से थोड़ा ही फ्लूइड गया है. यू डू एन अल्ट्रासाउंड, यू सी कि अच्छा खासा है, AFI उसका 15-16 है, देयर इज नो लीक. तुम लोग ऐसा उसको फॉल्सली लीक नहीं है बोल के घर भेज दोगे? नहीं. अल्ट्रासाउंड कैन बी डन बट यू कैनॉट बेस योर डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ मियरली दिस एमनियोटिक फ्लूइड कितना है बाय लुकिंग थ्रू अल्ट्रासाउंड. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. So once I've confirmed the diagnosis की PPROM है, 100% PPROM है, what do I do next? Next, I would like to do a few tests to see whether अभी ये diagnosis जो मैंने confirm किया है, उसके वजह से कोई complication तो नहीं हुआ है. अब ये complications क्या होने वाले हैं? सबसे important जो मैंने बोला था वो है कोरियोएमनियोनाइटिस. ये जो कोरियोएमनियोनाइटिस है वो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन. इट इज बेसिकली अ पॉइंट ऑफ सेप्सिस. इससे बेबी भी IUFD हो सकता है, मदर में भी सेप्सिस हो सकता है. इसके वजह से आई हैव टू बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट. सो व्हाट आर द टेस्ट दैट आई कैन डू? Two very simple tests that we do. One is CRP, that is C-reactive protein, and the second one is leukocyte count or WBC count कितना है. We also see fetal heart rate.
क्यों? whenever there is going to be infection in these patients, infection की वजह से fetal heart rate abnormalities आएगा, जो बीट टू बीट वेरिएबिलिटी होता है जो हम एनएसटी पे देखते हैं वो चला जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से बेबी को हाइपोक्सिया होगा, या हाइपोक्सिया की वजह से ये सब चेंजेस दिखेगा। बट द फर्स्ट चेंज दैट यू विल बी सीइंग वुड बी इन टू would be in two things. One would be WBC count, white blood cell counts, and the other one would be CRP, C reactive protein. Do we do this in all patients? In my opinion, or in patients who I see, I do them in all the patients. Often, even if the patient is telling कि मुझे आधे घंटे पहले से leaking है, करना है, I prefer to do it. A lot more institutions जहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि करना है नहीं करना है, इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है क्या, which is a resource intensive place जहाँ पे सब इन्वेस्टिगेशन नहीं होते हैं या फिर एक्सपेंसिव है, in those patients I would recommend that you do these tests if you think that there is a chance कि इसको रह सकता है chorioamnitis. What are the signs of chorioamnitis? Then you will ask me. सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो है फीवर, ऑब्वियसली इन्फेक्शन है, फीवर सबसे पहले होगा, फीवर सबसे पहले फीमेल पेशेंट को होगा। उसके बाद में अगर तुम लोग देखोगे तो वो पेशेंट फीवर के बाद में अगर तुम लोग फीटल हार्ट रेट देखोगे तो फीटल हार्ट रेट में एबनॉर्मलिटीज तुम्हें दिखेंगी। देयर विल बी यूट्राइन टेंडरनेस, तुम लोग पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर करोगे तो बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन द यूट्रस विल बिकम वेरी पेन सेंसिटिव, तो यूट्राइन टेंडरनेस फील होगा आपको, या फिर पेशेंट बोलेगी कि उसको पेन हो रहा है एवरी टाइम यू डू एग्जामिनेशन। सो ऑल दीज फैक्टर्स will give you a likelihood of chorioamnitis. In these patients, definitely CRP and WBC patient, not just to see कि कितना इन्फेक्शन है, but to also monitor the infection आगे जाके when you deliver her or when you give her antibiotics to reduce or to resolve the infection. So not just for diagnosing or to know कितना infection है, but to also see the prognosis whenever you start her on treatment with antibiotics and you deliver the baby. So you have to be doing this. But the unfortunate part here is, does doing CRP and WBC count completely ensure कि मुझे sepsis है या नहीं पता चल रहा है? नहीं, यही प्रॉब्लम है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन का सेंसिटिविटी इज ओनली ऑलमोस्ट 69% एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ 77%। इसका ये मतलब है कि 69% मतलब 31% ऑफ द केसेस में व्हेन देयर इज एन ऑनसेट ऑफ कोरियोमाइटिस योर सीआरपी माइट बी नॉर्मल। So you do not base all your clinical judgment merely on the basis of CRP. थोड़ा सा ध्यान तुम लोग उसके क्लिनिकल फीचर्स पे दो, फीवर पे दो, उसका यूट्राइन टेंडरनेस है कि नहीं देखो, उसका फीटल हार्ट रेट खराब हो रहा है कि नहीं देखो। गिव अ गुड लुक एट ऑल द क्लिनिकल क्राइटेरिया बिफोर मेकिंग अ जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल सीआरपी। सो बेसिकली नॉर्मल सीआरपी विल नॉट रूल आउट कोरियोअम्नियोनाइटिस। स्पेसिफिसिटी 77% ऐसा उन्होंने क्यों बोला है? क्योंकि बॉडी में और कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा, सोचो उसको अच्छा खासा सर्दी खांसी हो गया है, द पेशेंट हैज एलआरटीआई, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें भी बढ़ने वाला है उसका सीआरपी। उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, उसके वजह से भी बढ़ने वाला है। सो बेसिकली इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक टू कोरियोमाइटिस, इट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड इफ देयर इज एनी कॉन्कॉमिटेंट अदर इन्फेक्शन। सो डू नॉट बिलीव कि अगर उसका बढ़ा है मतलब वो कोरियोमाइटिस की वजह से ही है। रूल आउट इफ देयर इज एनी अदर फोकस ऑफ इन्फेक्शन, बीट इन द लंग्स, बीट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बीट इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूटीआई उसको है कि नहीं, ये पहले रूल आउट करो एंड देन जज करो कि उसको कोरियोमाइटिस के वैसे ये सीआरपी बढ़ा है कि नहीं। बट यस, डेफिनेटली आई वुड वांट टू डू दिस। One more test that they have not mentioned over here along with CBC and WBC is going to be high vaginal swab. High vaginal swab is basically मैं एक स्वॉप स्टिक लेता हूँ, वो स्वॉप स्टिक को वजाना में स्टेराइल स्पेकुलम जब डालता हूँ मैं घुमाता हूँ, वो जो फ्लूइड है उसको मैं कल्चर के लिए लेता हूँ और कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देता हूँ। बेसिकली कौन सा माइक्रोब है उसमें मैं देखता हूँ। नाउ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीआरओएम इज अ जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन आता है, साइटोकाइंस रेस करता है, साइटोकाइंस रेस करने की वजह से इट एक्ट्स ऑन द कोलेजन ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड इट ब्रेक्स ओपन द एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड लीकिंग स्टार्ट्स। तो ये इन्फेक्शन है कि नहीं, स्पेशली ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस विच इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू बी कंडक्टिंग ग्रो लेक्चर नेक्स्ट वीक, उसमें ये इतना बड़ा हुआ रहने वाला है, रादर उसमें इन्फेक्शन दिखने वाला है। सो आई ऑलवेज कलेक्ट अ हाई वजाइनल स्वैब एंड आई सेंड इट फॉर कल्चर सेंसिटिविटी सो दैट आई नो कि इसमें कौन सा इन्फेक्शन है। आई कैन अकॉर्डिंगली स्टार्ट दैट पेशेंट ऑन दोज एंटीबायोटिक्स। सो दिस इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर बट इट इज समथिंग दैट आई डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू शुड बी डूइंग। क्यों? क्योंकि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीआरओएम इज बिकॉज ऑफ सम जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो यू वुड वांट टू रूल आउट कि ये कौन सा इन्फेक्शन है।
Apart from that, what are the other things that you should be monitoring in these women? उन्होंने बताया गया है obviously all the vitals which include pulse, blood pressure, respiratory rate and temperature. क्यों? If the female is going into chorioamnionitis, तुम लोग का उसका टैकीकार्डिया होने वाला है, उसका ब्लड प्रेशर अगर सेप्सिस में गई तो एकदम ही कम होगा, अगर सेप्टिक शॉक में गई तो her BP will be very low, it will be refractory to even treatment. Apart from that, उसका respiratory rate, because if the patient is in sepsis, she'll be hyperventilating, उसका respiratory rate बढ़ेगा, there will be tachypnea, and obviously temperature, क्योंकि उसका temperature बढ़ने वाला है because of fever spikes. These are all the clinical symptoms that I should be looking for. नेक्स्ट क्वेश्चन arises, अगर ये मैं सब टेस्ट कर रहा हूं तो कितनी बार करने हैं? इफ आई सी दैट देयर इज नो चांस या फिर नो साइन ऑफ कोरियोamnionitis, देन आई कैन सेफली डू दीज टेस्ट फॉर वंस अ वीक. इफ आई सी कि उसके ल्यूकोसाइट्स पहले वाले रेज्ड है या फिर सीआरपी उसका पहले रेज्ड है, आई वुड वांट टू डू इट ऑन एन ऑल्टरनेट डे या फिर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक अंटिल इट नॉर्मलाइजेस. इफ इट डजंट नॉर्मलाइज, अगर सीआरपी कंटिन्यूअली रेज्ड है, WBC काउंट भी कंटिन्यू रेज्ड है, इसका ये मीनिंग है कि कोरियोamnionitis उसको डेफिनेटली है. I should be instead delivering the baby right now so that the mother and baby both are delivered safely. If the counts are decreasing but until they are high, I would like to do them at least every alternate day या फिर twice a week. If everything is normal, I'll be just doing all these examinations of WBC, CRP and HVS on a weekly basis. Also, I have to reduce the number of per vaginal examinations that I do because I do not want to iatrogenically introduce any infection into the vagina. So that is how I monitor them. If there are no signs of chorioamnionitis, I can send these women home and I can call them every week for monitoring. किसको एडमिट करना है किसको नहीं is something that I have discussed subsequently in a later part of this video. नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोनेटोलॉजिस्ट को बताना है. डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे नियोनेटोलॉजिस्ट का ही है. You have to tell the female that you please have a talk with the neonatologist. The neonatologist will counsel her regarding उसको क्या क्या जरूरत पड़ेगा. बेबी अगर 26 वीक्स पे डिलीवर हुआ तो NICU अपने पास उतनी फैसिलिटीज है या नहीं. He will counsel कि अगर है भी तो वो बेबी का क्या प्रोग्नोसिस होगा. If the baby is still 36-35 weeks, then they will tell कि सिर्फ बेसिक जो उसको प्री मैच्योरिटी के सिम्टम्स है वो रहेंगे, which we are adept at handling, but you still need to be able to understand कि risk थोड़ा बहुत तो रहेगा. So yes, definitely a meeting with the neonatologist is a much needed thing that you should be doing. How do I manage this female? I've done all the diagnosis. I have known कि इसको chorioamnionitis है या नहीं है. How do I manage this? The first question that comes is chorioamnionitis तो antibiotic देना है या नहीं? Erythromycin should definitely be given. Again, the same point कि the most common cause of PPROM is because of a genital tract infection. So to prevent sepsis, to prevent chorioamnionitis, I give a broad spectrum antibiotic that is also safe for the fetus. कौन सा देते हैं? एरिथ्रोमाइसिन. एरिथ्रोमाइसिन तो हम देते हैं. एरिथ्रोमाइसिन क्या है? इट्स अ मैक्रोलिड एंटीबायोटिक विच इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को वो कवर करता है. दे से कि 10 डेज तक दो या फिर अगर फीमेल डिलीवर कर जाती है, लेबर में जाती है, तब तक दे दो. वॉट एवर हैपन्स फर्स्ट. सो अगर 10 दिन पहले हो जाए तो 10 दिन तक दो. अगर फीमेल पहले डिलीवर करती है विद इन 3 और 4 डेज तब तक दे दो, उसके बाद बंद कर दो. दे से कि कोरियोamnionitis का जो रिस्क है ये एंटीबायोटिक्स देने के वजह से ऑलमोस्ट 40%. The relative risk came down to 66%. 66% मतलब ऑलमोस्ट 30 to 40% से ये जो चांसेस है ये कम हो गए हैं. सो डेफिनेटली इट मेरिट्स गिविंग दीज विमेन. ऑलमोस्ट 0.66 पे आ गया है. सो 34%, ऑलमोस्ट 30 to 40% से इन्फेक्शन के चांसेस कम होता है. सो डेफिनेटली इट मेरिट्स गिविंग एंटीबायोटिक्स. Also, they have shown that there was a significant decrease in the number of babies that were born within 48 hours. So there was a 30% decrease in preterm births. क्यों? क्योंकि जब तुम एंटीबायोटिक्स देते हो, when you're giving these antibiotics, जो भी इन्फेक्शन के वजह से साइटोकाइंस बढ़ रहे थे और साइटोकाइंस इवेंचुअली प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ा रहे थे. ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिट होता है when you give antibiotic. You give the antibiotic, you kill the organism. organism मर गया, so there is no cytokine का increase.
साइटोकाइंस नहीं बढ़ते तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बढ़ते, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या है? लेबर इनिशिएट करना. They won't initiate labor at all if the cytokines are not raised. So this track is broken. This जो flowchart था from organisms to cytokines to prostaglandins is broken down when you give those antibiotics and you kill those microorganisms. So definitely there is a decrease in the number of babies that were being born in the next 48 hours, and even in the next 7 days. Almost 21% से कम हुआ था risk of neonatal infection, babies को surfactant लगना after delivery, एंड एबनॉर्मल बेबी का सेरिब्रल अल्ट्रासाउंड, बेसिकली हाइपोक्सिया की वजह से जो इस्केमिक एनकेफेलोपैथी है, ये सबके चांसेस काफी कम हुए थे व्हेन यू एडमिनिस्टर्ड दीज वुमेन विद एंटीबायोटिक्स. Which is the antibiotic that I should be giving? Obviously, they are saying that erythromycin should be given, but the ones who have some allergy, which is very rare against erythromycin, you can consider giving penicillin. But penicillin देना है तो कौन सा देना है? Amoxicillin दे दो, एम्पीसिलिन दे दो, बट क्या मत दो? एम्पीसिलिन दे दो, बट क्या मत दो? एमॉक्सिक्लैव मत दो. एमॉक्सिक्लैव इज बेसिकली एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लैवुलिनेट. ये बीटा लैक्टम इनिबिटर, एक्सटेंडेड बीटा लैक्टम इनिबिटर है. बिकॉज व्हेन यू गिव दिस ऑगमेंटिन, व्हिच इज द ब्रांड नेम ऑफ इट, या को एमॉक्सिक्लैव, व्हेन यू गिव इट, इट इज with an increased risk of neonatal necrotizing enterocolitis. So do not give these women augmentin या co-amoxiclav. You can instead give just amoxicillin and ampicillin if the patient is not able to tolerate erythromycin. Also, what is the dose of erythromycin that is to be given and which salt to be given? Now there are two varieties of erythromycin that are available. One is erythromycin estolate and the other one is erythromycin stearate. So we give erythromycin stearate in the dose of, I'm using another color over here. We give in a dose of erythromycin 250 mg 4 times a day for 10 days. So that is the dose in which you should be giving 250 mg QID 4 times a day till 10 days or till the female delivers. So what after that? पहली बात, हमने एंटीबायोटिक्स देके वी हैव टैकल्ड द क्वेश्चन ऑफ कोरियामनाइटिस. अगर एरिथ्रोमाइसिन कम पड़ रहा है तो हम लोग आईवी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, सिफेलोस्पोरिन भी दे सकते हैं. सिफेलोस्पोरिन में हम लोग सेफ्ट्राक्सोन देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. दो आई डू नॉट बिलीव, अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली स्टार्ट ऑन आईवी एंटीबायोटिक्स. आई डू नॉट बिलीव इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सब हायर एंटीबायोटिक्स है, उसे तुम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हो. प्लस यू आर गिविंग वेरी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स व्हेन यू गिव ड्रग्स लाइक मेट्रोनिडाजोल या सेफ्ट्रैक्सोन. नैरो स्पेक्ट्रम इन कंपैरिजन टू व्हाट एरिथ्रोमाइसिन इज. एरिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, सबको एक साथ कवर करता है. सो यू रादर should be avoiding giving intravenous antibiotics unless there are proper signs of sepsis. You can manage these women on erythromycin. After 10 days, you stop the therapy. You can discharge the patient if she has not delivered. She can keep coming back to you every week. You just do a WBC and CRP ka monitoring, and that will be enough for this female. The next question is, किस किस को antenatal corticosteroids देना है? A very simple answer, all the pregnancies after 24 weeks से लेके 36 weeks तक आपको देना है. I would just extend it, I would say, for making it easy to remember, from 24 weeks to 37 weeks. Yes, by the way, 34 अभी 37, it is no longer 34. It is no longer 34 because अभी latest guidelines ने बोला है कि antenatal corticosteroids can be given till 37 weeks. Both ECOG and RCOG recommend giving it till 37 weeks. You have to stop giving it after 37 weeks, but after 34 weeks you can give it. So basically, yes, you have to be giving antenatal corticosteroids for lung development, basically betamethasone and dexamethasone between 24 to 37 weeks. Giving it below 24 weeks makes no sense because the baby is not viable. The baby would hardly be 300, 400 or maybe 500 grams, and hence it is not viable. 37 weeks के बाद में नहीं देना because it has reached term. There is no increased benefit that the corticosteroid will give to the baby. Excess dose भी नहीं देना है. If you give it to a female and she doesn't deliver in the next 7 days, there are few institutions who practice giving a rescue course, but do not preferably give that rescue course. और अगर देना ही है तो no more than one rescue dose should be given, क्योंकि giving too much of corticosteroids can increase the risk of cerebral palsy in the baby. Also, there is going to be a slight increase in the WBC count and CRP after you give corticosteroids. So there is going to be a falsely elevated level of CRP
and WBC count, which normalizes after 3 days of administration. But you have to understand कि it is not because मैंने उसको दिया गया है, मैंने उसको दिया है एंटीबायोटिक इसलिए उसको इन्फेक्शन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया इसलिए इन्फेक्शन हुआ है, नहीं. इट यूजुअली हैपेंस, यू जस्ट हैव टू मॉनिटर कि उसको बाकी के साइंस नहीं आ रहे कोरिया अम्नियोनाइटिस के. तो ये एक बात याद रखनी है. One more thing that happens whenever you give corticosteroids is कभी-कभी a female stops perceiving fetal movements. It's a very common occurrence. You don't need to worry. All you can do is fetal heart rate monitoring, which will be enough for that pregnancy. The next question, magnesium sulfate for neuroprotection. A lot of y'all might have known, a few may not know. So magnesium sulfate जो हम देते हैं pre-eclampsia, severe pre-eclampsia, eclampsia में to prevent and to treat eclampsia basically, उसका एक और use है basically all have all read in your undergraduation कि magnesium sulfate is a membrane stabilizer. So ये membrane stabilizing जो उसकी ability है, it is even useful for the baby that is very preterm. Very preterm मतलब क्या, जो 28-30 weeks से deliver हो रहे हैं. So जो जूस्पान रेजिमेन है, जूस्पान रेजिमेन इज बेसिकली 4 ग्राम जो हम आईवी से देते हैं, फॉलोड बाय, ये हो गया उसका लोडिंग डोज, और फॉलोड बाय उसका मेंटेनेंस में हम देते हैं 1 ग्राम पर आवर के रेट से इन नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगर लैक्टेट. ये जो डोज है ये जूस्पान रेजिमेन है अपना रेगुलर. यही जूस्पान रेजिमेन, दो इसको जूस्पान रेजिमेन ये न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए नहीं बोलेंगे, बट द सेम डोज इज गिवन फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन. इट इज गिवन at least as per greentop guidelines. RCOG they say कि 30 weeks तक दे सकते हो, but NICE guidelines, which is a parallel institution in the UK, they say that you can even give it till 34 weeks of gestation. In our institution we prefer to give it till 32 weeks of gestation, which is between both the guidelines, but you can safely give it till 34 weeks of gestation. You give it only for 24 hours prior to delivery. You do not give an overdose of magnesium sulfate. क्यों? क्योंकि it is known to cause osteopenia in the fetus and magnesium toxicity. जैसे eclampsia में हो सकता है, वैसे मदर को भी magnesium toxicity हो सकता है. So when is the ideal time to give it? When you think that the baby will deliver in the next 24 hours, you start this patient on this magnesium sulfate, and if the baby's life extends, if it doesn't deliver beyond 24 hours, then you don't give it again. एक ही बार देना है, नहीं तो fetal osteopenia हो सकता है and mother को toxicity हो सकता है. सबसे बड़ा क्वेश्चन, समथिंग दैट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फैकल्टीज द मिस्टेक दैट दे डू, टोकोलिटिक एजेंट देना है कि नहीं. टोकोलिटिक एजेंट देना is what I believe is a blunder that you should not be committing. A lot of people say कि हम लोग जब तक steroid cover नहीं होता है for 2 days we'll give them tocolysis and then we'll stop it. There's no point of doing it. A lot of people give tocolysis with isoxaprine, which is duodenone, या फिर nifedipine, जिसको हम डेपिन भी बोलते हैं. ये लोग even atosiban is a drug that that is very expensive, so not a lot of people give, but it is one of the drugs. It's an oxytocin antagonist. So ये जो 3 ड्रग्स है लोग इनडेफिनेटली देते हैं, बस चालू रख देते हैं, पॉइंटलेस है. ये सबके साइड इफेक्ट्स है. आइसोक्सुप्रिन इज अ बीटा माइमेटिक, उसके वजह से तुम्हें पाल्पिटेशंस हो सकते हैं. यू कैन हैव पल्मोनरी इडीमा. इट इज इवन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डियक पेशेंट्स. इट कैन इवन लीड टू डायबिटीज mellitus, increased sugar levels. Nifedipine causes headache, pulsatile headache. It can even cause palpitations. It can cause tachycardia. Avoid giving it. Atosiban, an excellent drug, but the problem is it is very expensive. But you don't need to give it in patients with PPROM. If there is any onset of chorioamnionitis, naturally ये जो प्रेगनेंसी है उसमें साइटोकाइंस बढ़ेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ेंगे एंड लेबर इनिशिएट होगा. तुम लोग आर्टिफिशियली ये कॉन्ट्रैक्शंस को रोक के यू आर इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ chorioamnionitis. So you should just let the pregnancy be. If there are contractions that are coming, that is nature's way of telling the body that enough is enough. अभी जो contractions आने वाले हैं, that is probably because there is an infection inside and you might need to deliver that baby. And hence tocolysis is something that we should avoid. A lot of people have said, or a lot of studies have said that though tocolysis can increase the possibility of prolonging the pregnancy, but you pay a price for it, and the price is that there is an increased risk of 5-minute Apgar score less than 7 and increased need for ventilatory support. So you should be definitely avoiding, because there is also an increase in the risk of maternal chorioamnionitis. So there is no definite benefit to the baby. So do not give tocolysis in females with chorioamnionitis, or rather with PPROM. The next question,
something that we discussed earlier a bit. Can these women be monitored at home? In my experience, I admit these women for a few days, that is at least for 2 to 3 days. I give them antibiotics. I see to it that they are not developing any infection. And once I am sure that the CRP levels are normal, she doesn't have any signs of chorioamnionitis, her WBC levels are normal, her high vaginal swab is negative, I send these women back home. I tell them that you can go home and you can monitor. बट देर इज वन पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, जैसे हमने पहले बात किया कि अगर 26 वीक्स प्रेगनेंसी में पीपीआरओएम हुआ है, वो प्रेगनेंसी आगे जा सकता है 1-2 महीने तक. बट इफ इट हैज हैपेंड इन 36 वीक्स, she might deliver in the next 2 to 3 days as well. So you have to be careful of the fact that whenever you send these women home, they might come back in labor immediately and they shouldn't end up delivering at home, क्योंकि प्रीटम बेबी को घर पे डिलीवर किया, so there won't be any neonatologist available there to resuscitate the baby. So we have to take this into consideration. So यहाँ पे उन्होंने बोला है कि we should assess कि if there is any possibility of antepartum hemorrhage जो हुआ है, एमनियोटिक वॉल्यूम कैसा है, अगर एकदम ही कम है तो मत भेजो, एंड व्हाट आर द क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी मार्कर्स ऑफ इन्फेक्शन. बेसिकली डब्ल्यूबीसी और सीआरपी अगर नॉर्मल है तो ही घर भेजो. They have again mentioned कि the number of days that a pregnancy can be prolonged decreases as your gestation increases, so you have to be even more careful as the pregnancy reaches term before thinking of sending that female home. Lastly, they have mentioned that there are few indications, like if the PPROM has happened before 26 weeks, if it's a non-cephalic presentation, मतलब breach या transfer से oblique lie है, and अगर oligohydramnios है, so there is an increased risk of complication. Complication मतलब क्या? It can be intrauterine fetal demise, abruption हो सकता है, cord prolapse हो सकता है, and सबसे गंदा है delivery happening at home and the baby dying immediately. So अगर ये तीन में से, that is if the PPRM has happened before 26 weeks, if it's a non-cephalic presentation and if there is oligohydramnios, अगर ये तीनों present है, ये तुम लोग जो तीनों अगर प्रेजेंट है तो ये फीमेल्स को प्रेफरेबली हॉस्पिटल में रखो. डोंट सेंड देम होम. देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस हैपनिंग एंड द फीटस डाइंग बिकॉज ऑफ दैट. फाइनल फ्यू थिंग्स, एमनियो इन्फ्यूजन का कोई रोल है क्या? अब तक स्टडीज आर नॉट एडिक्वेट. आई विल नॉट से कि नो, बट स्टडीज आर नॉट एडिक्वेट. एमनियो इन्फ्यूजन इज बेसिकली आप अंदर एक फ्लूइड डालते हो और रिप्लेनिश करते हो उसका वॉल्यूम. द प्रॉब्लम दो हियर वुड बी दैट जो लीक बैठा हुआ है, wherever that membrane has ruptured, वहां से फिर से लीक होता रहेगा जो भी तुम लोग अंदर इन्फ्यूज करोगे. सो फॉर दैट समथिंग जिसका अब तक इतना स्टडीज हुआ नहीं है is available, something that I have never used but I've only read about, amnioseal. इट्स अ मेडिकेशन जिससे ये जो जहां पे भी फटा हुआ था, अपन ने जो ब्लू कलर से पढ़ा था, wherever the membrane had ruptured, वहां पे वो सील करता है. अगर ये ऐसा यहाँ पे रप्चर हुआ था तो यहाँ पे वो आके सील कर देता है, एमनियोसील. सो इसका ऐसा यूज है, बट द स्टडीज आर नॉट yet adequate. बट एमनियो इन्फ्यूजन, the role is still not recommended because it is not yet clear. So you should be waiting upon before knowing कि amnio infusion देना है कि नहीं. There is one more thing that people do in patients with PPRM. They give them infusion of amino acids. I have never seen any clinical benefit. A lot of people, there are isolated studies जहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि amniotic अपना amino acids देने के वजह से the perfusion to the baby will increase and जिसके वजह से urine production बढ़ेगा and amniotic fluid will increase. I have never seen it happen in my clinical practice, but a lot of people practice it. Intravenous amino acids दे देते हैं, but not given in any recommendations. They can be doing it out of their own clinical experience and on the basis of isolated studies. Last, सबसे biggest question, deliver कब करना है? All the guidelines until now said कि you have to deliver it at 34 weeks, but नहीं, अभी हमने बोला है कि you can pull these pregnancy if there are no signs of chorioamnionitis with expectant management until 37 weeks. So if there is no possibility or no risk of chorioamnionitis, if you give her antibiotics और अगर chorioamnionitis था वो गया, पूरी तरह से resolve हो गया, you can conservatively pull this pregnancy till 37 weeks, and at 37 weeks you can do termination of pregnancy by induction of labor. Dinoprostone gel डाल दो. You obviously cannot use Foley's catheter induction क्योंकि leaking पर वजह में contraindicated है, but pull these pregnancies with PPRM till 37 weeks. अगर तुम लोग 34 वीक्स पे करते हो वो अननेसेसरी है. 37 तक आराम से पुल कर सकते हो एंड 37 पे आते ही उसको डिलीवर कर दो, क्योंकि उसके बाद में तो कोई बेनिफिट है नहीं. So that is it about our lecture today on premature preterm rupture of membranes.
I hope you all understood this guideline and you are a lot more capable now of delivering these women, of managing these women, and giving the mother and the baby the best possible outcome. I shall be seeing you again in the next episode of Guideline Review of the Week. Until then, signing off, Dr. Aditya Nimkar. Good night.